अभी देखिए सोनम जी का रिप्लाई आपको आपके सामने फिर से पेश कर रहा हूँ। बहुत ही मजेदार होने वाला लगता है। Right. I have not come across any such report. This is news to me that India is talking to Taliban to tackle Al Qaeda threat. I know India has a channel with Taliban, but I am not sure if we have ever discussed, like, joint mechanism with them to tackle terrorism. I don't think we are going to rely on terrorists to tackle terrorists. Talking about you saying that why is India not, जितना मुझे समझ में आया, आप बेसिकली कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ क्यों कॉपरेट नहीं करता जब अगर टेररिज्म। regional regional mechanism. Why India is talking with the Central Asian countries, with the Iranians and the others? Why not having, well, sitting with the Afghan Taliban and Pakistan? Because Afghan Taliban भी कहते हैं that the major threat for them is Al Qaeda, okay, and Islamic State. That is same for Pakistan, same for India. So this is what I'm saying. जी जी, आपको याद होगा जब इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी आफ्टर तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था और पाकिस्तान ने मना कर दिया था। पाकिस्तान को लगा कि भाई इंडिया कौन होता है यहाँ पे ये चीज़ें डिसाइड करने वाला। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल डिसएग्री विद योर क्वेश्चन। आई थिंक इट्स अ लोडेड स्टेटमेंट रादर, because there is nothing for us to, there is no opportunity for us to grab in the first place. And आई थिंक पाकिस्तान के साथ टेररिज्म पे कॉपरेट करना थोड़ा सा आयरॉनिक भी होगा, बिकॉज वाइल पाकिस्तान हैज आल्सो बीन फाइटिंग टेररिज्म, पाकिस्तान हैज आल्सो बीन द एपिसेंटर ऑफ इट। तो a country where people call Osama bin Laden a martyr and they call Taliban terrorists, freedom fighters who've broken the shackles of slavery, it's a bit difficult to collaborate with such a country to tackle terrorism, because अगर आपने उनको legitimize ही कर दिया, अभी अब आपको उल्टा पड़ गया है पाकिस्तान को, coming to your senses and realizing that okay, this group is a rogue group and this is not how we should have dealt with them, वो एक अलग बात है। बट अदरवाइज मतलब हमें तो पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन यही है कि इंडिया इज एन एनिमी नेशन, राइट? इट इज वेरी ओपनली सेड देयर, एंड आई एम श्योर in India also in certain corridors it is spoken about very openly. But even the Americans, जो आपके strategic partners रहे हैं for a long time, who've been collaborating with you in their war, so-called war on terror, uh, even when it comes to them, even they have a trust deficit with Pakistanis, right? In fact, multiple US lawmakers in the recent past, they have spoken about probing Pakistan's role in what happened in Panjshir, and otherwise also what was Pakistan's role in basically giving a boost to the Taliban, training them. And जब बेनज़ीर भुट्टो का जब टाइम था, तब तो आपने लिटरली उनको वायरलेस कम्युनिकेशन और बेटर रोड्स एंड हर तरह की उनको आपने फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो अगर आपकी जो लॉन्ग टर्म एलाइज है वही पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं कि भाई आर दे फोज और दे आर फ्रेंड्स in our war on terror, are they on that side or this side, agar wo log hi ye cheez ko judge nahi kar pa rahe hain, so I think it would be hard for a country like India, which has been a victim of terrorism emanating from deep within Pakistan, to trust Pakistan on collaborating on entire terror operations. But agar aapke paas koi aisa incident hai jahan pe aap mujhe bata sakte hain that the Pakistanis have reached out to New Delhi, Islamabad has, or Rawalpindi has reached out to New Delhi saying ki okay, let's work on this together, and India has said no, we can certainly talk about it. But for now I disagree with your assertion. I think it's a loaded statement. It doesn't have any merit. मेरे ख्याल से Pakistan has helped India as far as some intelligence is concerned, that there could be possibility of some threats, I think, in Indian occupied Kashmir. One thing I remember still, Pakistan ने Indian authorities को बताया था long ago, मुझे अब exact उसका नहीं पता वो कौन सी चीज, लेकिन पाकिस्तान ने इंटेल शेयर की थी। और दूसरा जो है वो as far as I think SAR के मैकेनिज्म में लिखा हुआ है, और भी जो हमारे बायलैटरल वी हैव मिसट्रस्ट इन अफगानिस्तान। मुझे याद है वो जो अजीत डोभाल साहब ने एनएसएस की मीटिंग बुलाई थी, उसमें उस वक्त पाकिस्तान के एनएसए मोहित यूसुफ होते थे, उन्होंने बड़ी इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट दी थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि वी शुड हैव गॉन इन इंडिया टू लुक इनटू व्हाटएवर दे आर टॉकिंग,
just don't agree whatever they say, ना agree करें आप उसे, लेकिन जाएं देखें क्या बात हो रही है, give your perspective. फोरम खाली छोड़ना is not a wise move. और ये कोई अकलमंदी की बात नहीं थी, बट उस वक्त मेरा ख्याल है कि and I agree simply with you on this Osama bin Laden thing जो इमरान खान ने किया. He said he is a martyr. He's not a martyr. He's a terrorist. वो एक दहशतगर्द है, उसकी जमात दहशतगर्द है. The Pakistani military and the people have been fighting against. और ये politicians जो हैं, at times they have been confusing to win over some brownie points. Even Shah Mahmood Qureshi ignored the question that came from the Tolo News editor. In Islamabad again हमने उसके ऊपर बड़ी तनकीद की थी. There is no space for that. लेकिन obviously one should have a clarity on that. लेकिन the political class, they think it everything from an electoral perspective. The state and maybe others. Do you want to say something? Well, I think it's a little unfair to put everything in the political class. I don't know if you're aware, Amrullah Saleh, who was the NDS chief back then, up till I think 2010, एंड उन्होंने ये अब ऐसा नहीं कि वो आज कह रहे हैं, अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज निकाल के देख लीजिए, उन्होंने बहुत ही बार इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि ही हैड लाइक वर्ड विद परवेज मुशर्रफ बैक देन व्हेन ही वाज द आर्मी चीफ. उन्होंने उनको डोसियर्स दिए, उनको पूरा बताया कि भाई दिस इज वेयर लादेन इज प्रेजेंट राइट नाउ, ही इज प्रेजेंट राइट इनसाइड पाकिस्तान. ओके, सो आई मीन लेट्स गेट टुगेदर एंड गेट दिस गाय. एंड परवेज मुशर्रफ, अगर हम साले की जुबान में कहें तो वो कहते हैं कि उन्होंने मेरे पे फाइलें गिरा दी और वो टेबल पे पटकने लग गए कि हु डू यू थिंक यू आर, आपको कैसे पता, एंड दिस इज नॉट ट्रू. तो ऐसा नहीं है कि अब देखिए RNAW के और NDS के जो हैं आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं. इनफैक्ट these days in lot of power echelons in India and strategic circles it is being talked about we took everything from NDS when we were working together, but probably we should have done a little more for people like Amrullah Saleh. Probably we should have given them asylum. We have had long standing cooperation with the NDS, but आपने कहाँ पे cooperation की है terrorism पे? मुझे when the Pakistani say we have fought a war on terrorism, I don't really understand what do they mean by that. एक war on terrorism जो होती है उसकी फिर एक ही motivation होनी चाहिए कि हमें दहशतगर्दों से लड़ना है. उसमें आपके मल्टीपल फिर उसमें आपके एजेंडाज नहीं होने चाहिए कि भाई we will also trade our people in exchange for like some quick bucks, and we will also find strategic depth in a country by alienating its people. That is not how it works. आप किसी एक nation को पूरा alienate करके, अगर आप बोलेंगे कि आप पूरे अफगान अवाम को एलियनेट करके आप तालिबान के साथ दोस्ती कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है. कमर, आप यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अफगानिस्तान में जो तालिबान है, द अफगान तालिबान, आई मीन दे आर ऑल्सो एथनिक Afghans, right? They are Pashtuns, primarily they are Pashtuns, ethnic Afghans, even though there are other ethnicities also. तो उनकी जो प्राइमरी जो लॉयल्टी होगी वो अफगानिस्तान के साथ ही होगी. अगर वहाँ की आवाम जो है एट लार्ज पाकिस्तान से नफरत करेगी तो अफगान तालिबान इवेंचुअली दे विल हैव टू टो दैट लाइन, राइट? एंड उन्होंने भी कभी भी आपकी जो ड्यूरन लाइन है उनकी भी वही पोजीशन रही है उसके ऊपर जो कि पुरानी अफगान गवर्नमेंट की थी. बट आपने उनको दुश्मन समझा, आपने उनके साथ कॉपरेट नहीं किया कभी भी. आपने सोचा ये जाएंगे और आपकी वो जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, रीजनल स्पॉयलर्स एंड रॉ की साजिश और मुसाद की साजिश, वो आपको सब दिख गई कि वो किसी की कोई साजिश नहीं थी. It was you who did not have your moves calculated. तो जो आपके बिल्कुल बगल में रहते थे, जो आपको इंटेलिजेंस शेयर करते रहे कि भाई यहाँ पे लादन बैठा हुआ है आपकी टेरिटरी के अंदर, उनके ऊपर आप फाइलें फेंकते रहे, उनके सामने आप टेबल पे मुक्के मारते रहे, तो फिर जिसको आप दुश्मन मुल्क कहते हैं वो पता नहीं आपके साथ कैसे कॉपरेट करे. जिन्होंने आपके साथ कॉपरेट किया वो खुद आज अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई डिड वी use these people or did we get used, or did we play them or did they play us? So I think it's a little difficult to trust a country like Pakistan with the kind of credentials it comes with. अच्छा, एक छोटा सा सवाल करिएगा, छोटे जवाब दीजिएगा. आप क्या समझती हैं वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान का जो मेन एलाय था, क्या वो अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स थी या अफगानिस्तान था? एलाय? यस. आई थिंक आप किसी की एलाय नहीं थे. यू जी जी ओके, बोले आप.
जी 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 मेरे मेरे ख्याल से आप किसी के भी एलाई नहीं थे इसमें, बिकॉज आपके खुद के जो फॉर्मर आईएसआई चीफ थे जो हमीद गुल, वो रिकॉर्ड पे ये बात मान चुके हैं कि हम जो हैं अमरीकियों की मदद से ही अमरीकियों को यहाँ पे हराएंगे। एंड वो बड़ा, सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है। मैं मेरी जरा एक छोटी सी, मैं दोबारा रिफ्रेम कर लेता हूँ सवाल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो क्या नाम है, उसने जन साहब ने ये कहा, वो एक और एक नैरेटिव है। अभी आप सुन रहे थे, अभी देखिए, अभी ट्विस्ट अभी आने वाला है, क्वेश्चन को चेंज करने वाले थे। अभी देखिए, अभी सोनम को रिप्लाई करने नहीं देंगे ये लोग, मुझे पता है। अभी देखेंगे क्या करते हैं कमर चीमा सर। आई एम जी टॉकिंग अब हार्ड कोर कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन, हर तरह की जो कोऑपरेशन है ऑन ग्राउंड, हर तरह राइट। हम अमरीकियों के करीब थे कि अफगानियों के करीब थे, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ दिस फ्रॉम 2018, 2002-4 से आगे की मैं बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री तो बड़ी लंबी है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम यू, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है बेसिकली ये। I was coming to that only. What I was trying to say is that you were basically for the hire. If somebody had paid you more than the Americans did, fortunately there was nobody else who could pay as much as the Americans did, you would have supported that country also. That's what I'm trying to say. You were for the hire. You were not for. If you were with Afghans, I mean, you would support a democratic government in Afghanistan. Your prime minister wouldn't sit and say कि भाई ये जो वहाँ पे तो अगर लड़कियों को तालीम नहीं लेने दे रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान, तो उसका ये तो उनका कल्चर ही है। भाई सेम ही लोग आपके केपीके में भी है ना, वहां पे अगर आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन जो हैं उनको तालीम मिले, तो फिर आप यू कैन नॉट चूज डिफरेंटली फॉर अफगानिस्तान। I don't think Pakistan as a state was with Afghanistan or with the Americans. You wanted a lot of money, and you, of course, also had your own problems in your tribal areas in that region of your country. So, you just went with the flow. I don't think you had any kind of agenda in mind or any particular outcome that you were looking at. अगर आपने किसी एक particular outcome को long term strategy के साथ pursue किया होता, you wouldn't be in a situation that you are in today. You went with the flow, एंड जहां पे आपको लगा कि यू टर्न मानना चाहिए, आपने जहां पे तालिबान को हड़काना था, आपने मुल्ला बिरादर को भी जेल में डाल दिया अपने इंटरेस्ट के लिए। फिर बाद में आपने उनको कतर में भी भेज दिया, उनको टेबल पे भी ले आए। आपके अपने Let's keep मकान this में। answer. I requested to keep this answer short because मैं आपको एक conclusion मैं I don't stop you whatever you say, and मैं No, I mean, there are no simple answers to this, ओके right? मैं There are no बताता हूँ, simple answers. Yeah. मैं मैं इधर कुछ बोलना चाहता हूँ। आप कमर चीमा सर का एरोगेंस देखिए, खाली वाइस प्रेसिडेंट था। हम लोग क्या है पता नहीं। कमर चीमा सर, आप किधर लेके जा रहे हो इसको? मुझे लग रहा है सोनम महाजन अभी मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। मैं उस तरफ जाने वाला नहीं हूँ। तो मैं इधर ही वीडियो खत्म करता हूँ, क्योंकि इनका जो एनालिसिस है पाकिस्तानी का, मतलब उनके लिए अलग किस्म कुछ रूल्स चाहिए, और अदर कंट्रीज के लिए अगर अदर रूल्स, उसके ऊपर चलना है। तो ये ऐसा नहीं होता है कमर चीमा साहब। तो आप थोड़ा शांत हो जाइए, आप थोड़ा समझ लीजिए, आप तो प्रोफेसर हैं। तो थैंक यू। तो मैं ये वीडियो इधर ही खत्म करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सोनम जी बहुत गुस्से में है। तो ये तो फाइटिंग के तरफ चला जाएगा। हमको कुछ इंफॉर्मेशन भी रहेगा, बट लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लड़ाई झगड़ा होगा, मतलब आर्ग्यूमेंट्स होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं, आर्ग्यूमेंट्स होगा। तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए मैं इधर ही खत्म करता हूँ। मैं और एक वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।